Yesterday we discussed idealism as a political philosophy. Today we will talk about liberalism. For दिन आप थे कल क्लास में? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आइए। सर बहुत ठंडा लग रहा है। 5-10 मिनट सर लिबर्टी रखिएगा, ठंडा है। And no sir, I was not feeling well. Okay, so have you done the recorded class? बस 15 मिनट लगेगा। Okay, fine. जो हमारा टेक्नीशियन था वो ही लेट आया है, तो आज थोड़ा ज्यादा लग रहा है। 5-6 मिनट पहले उन्होंने क्लास शुरू किया, 5-6 मिनट में ऐसे ही थोड़ा लेट कर दिया ताकि और भी लोग आ जाए, so that we can begin. Chलिए, so today we'll talk about liberalism, and I told you that liberalism was the first political ideology of the industrialized West. जो वेस्टर्न कंट्री में जो पहली सिस्टमैटिक पॉलिटिकल फिलॉसफी इवॉल्व हुई वो थी लिबरलिज्म, राइट? And that liberalism was become very popular among the urban middle class of Britain, who challenged feudalism and landed aristocracy. ये जो मिडिल क्लास थे, ये जो इंडस्ट्रियलाइज्ड ये ब्रिटेन के, राइट, वो लोग ने चैलेंज किया किसको? फ्यूडलिज्म को भी, लैंडेड एरिस्टोक्रेसी को भी, और एब्सोल्यूट मोनार्की को भी उन्होंने चैलेंज किया। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि जो लिबरलिज्म है वो हाईली इन्फ्लुएंस था किससे? रेनेसा, रिफॉर्मेशन, एनलाइटनमेंट, उस समय जो एम्पिरिसिज्म इवॉल्व होके आई थी, साइंटिफिक टेम्पर इवॉल्व होके आई थी, राइट? That gave rise to liberalism and capitalism in the industrial West countries. On the other hand, if you look at the revolution takes place, like for example French Revolution, then you had before French Revolution you had English Revolution, right? That fight was between parliamentarian army and the royal army that we talked about while I taught you Hobbes, right? How parliamentary army fought, right, against the royal army, right? And it limited the power of the monarch, right? And one of the army men was the basically father of John Locke, right? And John Locke was the man who supported individual rights, liberty, opposed absolute monarchy of the state, right? So if you look at the English Revolution, French Revolution, American Revolution, they highlighted the importance of individual rights and liberty. Okay? They challenged absolutism of monarch and divine right theory. जो समय divine right theory था उसको उन लोगों ने challenge किया. And they established certain principles, right? We'll talk about that certain principles. Now, the liberalism in the very beginning phase were called classical liberalism. Classical, we'll talk about why classical, because still we believe on that liberalism. And who was the father of liberalism? John Locke. John Locke was father of liberalism, right? Now, if you look at in the 20th, now, as I told you that liberalism did not face challenge for the next 250 years. It evolved in 17th century, and of course it has fight with feudalism. So it fought with feudalism. People believed liberalism is a curse. Now in 18th century, liberalism flourished in other part of the world. Now in 19th century, it flourished again.
By mid of 19th century, liberalism faced challenge from the working class movement, that is socialism. So 250 years it had no challenge. 250 years, you know, basically it remained a very dominant political ideology, right? But by the mid of 19th century, it started getting challenged from socialism. And liberalism and socialism both confronted. Even if you look at in the 20th century, you had Cold War. The Cold War was between the two ideology. One was liberalism and another was socialism. Socialism represented by the USSR, liberalism represented by the West, the US and the USSR, right? However, there was some changes in liberalism. Some changes in liberalism. Now look at in the second half of the 20th century, look at in the 1990 when socialist world collapsed, right? When disintegration of the USSR taken place, unification of Germany took place, right? Eastern European country converted into, transferred into the free market economy and democracy. Now liberalism triumphed, right? Liberalism has got victory over Sir, socialism. will you please repeat the last line? Liberalism tuned due to Yeah. market. क्या बोले sir आपने? Due to, look at the 1990, Yeah. the end of Cold War. 1990 after Cold War. Look at the Cold War, how Cold War ended, right? So if you look at what was the symbol of end of the Cold War, the disintegration of the USSR, right? The transformation of the Eastern European country into a democratic country. It was a socialist. They transformed their economy, their politics, right? The Berlin Wall collapsed in 1991, right? Germany unified. There was a unification of Germany, right? The Eastern Germany and Western Germany both combined. So it was a basically triumph of liberalism, right? Socialism declined. One philosopher called it is the end of history. Okay, anyway, that is the entire journey of liberalism. Frankfurt नाम था ना? Hmm? The philosopher who called is Foucault. No, that was Francis Fukuyama. 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 Right. Anyway, so if you look at liberalism, it has several variants. It has several variants. Now let me move one to one. Right. As I told you that yesterday, liberalism is a meta ideology. It is a meta ideology. It is evolving. 17th century, right? And still it is remained a very dominant idea. अभी भी हम liberal world में रह रहे हैं, right? ठीक है? Now if you look at the liberalism, right? John Locke is known as father of liberalism. So John Locke, along with other philosophers, contributed in shaping the world, right? John Locke, Adam Smith, David Ricardo, David Hume, Herbert Spencer, Thomas Paine. These were the scholars, right, who shaped the world. As I told you that yesterday, liberalism evolved just opposite of capitalism. Feudalism. Right? कल हमने आपको थोड़ा सा रेफरेंस करके बताया था. If you look at feudalism, was an agrarian society. Now capitalism was purely industrial society, capitalist society. Right? Now, liberalism believed on constitutionalism. Liberalism believed on, basically, free market society,
It believed on consent, representative democracy, right? And who was the pioneer? The pioneer was John Locke, right? Okay. Now, if you look at liberalism, let me tell you the salient features of liberalism. अगर आप salient कुछ लिखिए मत, समझिए salient features. कुछ फीचर्स देख लीजिए लिबरलिज्म का क्या है. फर्स्ट एग्जांपल, राइट, कि ह्यूमन नेचर को ये कैसे मानता है, इंसान को कैसे मानता है, राइट. लिबरल के लिए इंसान क्या है, राइट. तो लिबरल के लिए इंसान क्या है? एक रैशनल बीइंग है. But liberal, look at John Locke. He said man is a rational being, right? Man has reason. ठीक है? Man is a best judge of his own interest. He knows what is right and what is wrong, right? And therefore, man does not require external intervention. उसको कोई बाहर से दबाव नहीं चाहिए, ना ही सोसाइटी की, ना ही स्टेट का. ठीक है? Because he endowed with reason, he can pursue their best interest. Man is the best interest of their own self. Got the idea? So if you look at, they focus on man is rational. Human nature में rational है sir. Man क्या है? Doesn't want to get any Rational. Yes. external intervention. Man Yes. is rational. Man possesses reason. Yeah, man possesses reason. Liberalism. Right? Man के पास है reason है. And in feudalism there is a rituals that bound the Yes, rationality वहाँ पर नहीं थी. external force. Feudalism is coincide with Yes. Now if you look at the, liberalism focused on individualism. atomism. We can say that it focus on atomism. अभी Now बाद में एटॉमिक उस पे आएंगे. क्रिटिक है वो एटॉमिक. एटॉमिक की क्रिटिक है ये क्रिटिक है. But sir, the other society influence of liberalism going to be atomism. So आप देखेंगे कि जब फ्यूडलिज्म फोकस करता है सोसाइटी पे, कम्युनिटी पे, राइट, लिबरलिज्म फोकसेस ऑन इंडिविजुअलिज्म. It gives priority to individual over the state or the society. It believes that individual came first, then society came later on. Look at John Locke. Society is a product of the social contract. The state is a product of the social contract, right? And therefore, society or state has no authority to put restrictions on individual. Unnecessary restrictions should not be put on individual. ठीक है? इंडिविजुअल क्या है? वो फ्री है, वो प्रायर है देन द सोसाइटी. Right? Now third, if you look at, they focus on liberty. The third important thing is they focus on liberty. What do you mean by liberty? Look at, liberty is the core idea of liberalism. Liberty is a core idea of liberalism. It focuses on self-autonomy. Of individual. If you look at feudalism, which focuses on restrictions, but liberalism focuses on individuals' liberty. They believe that being, rational and independent, all individuals are free. क्योंकि हर इंसान क्या है? इंडिपेंडेंट है, रीजन है उसके पास, तो हर इंसान क्या है? स्वतंत्र है अपने बारे में सोचने के लिए. सर मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है. बोलो बोलो. सर सोशलिज्म एंड फ्यूडलिज्म, are they equal? I think नहीं.
Because feudalism also says that it focus on society, you say extract according to the need. सोशलिज्म, हाँ, तो उनकी सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग अलग है। किनकी? मतलब सोशलिज्म यू आप केवल सर उसमें सोशलिज्म में और फ्यूडलिज्म में एक डिफरेंस मान सकते हैं, दोनों में रिस्ट्रिक्शंस हैं। हाँ, फ्यूडलिज्म इज बायस्ड बाय द रिलीजियस, रिलीजन इज एवर, बट इन सोशलिज्म रिलीजन इज डाउन द एडमिनिस्ट्रेशन। बस यही एक पॉइंट का अंतर है, बाकी स्ट्रक्चर फीचर सब सेम है। नहीं, अंतर है, अंतर। Right? So look at, feudalism focus on restrictions because of the religion and religious rituals. Now liberalism focus on liberty. Liberal argue that each individual is free. Look at John Locke, right? Look at J.S. Mill, right? Both are basically the propounder of individual liberty. Okay? Now, if you look at what about they think about society, they believe that society is not prior. Who's prior then? Individual. What is society for them? Society is a congregation of individuals. For liberals, society is a mere congregation of individuals. So liberals always give priority to individuals over the society. Got the idea? Right? Now look at state. ये feudalism में कल बता दिया था. Now look at state. They talk about limited state. For liberal, state should be limited. It should be based on the rule of law. Right? Constitutionalism. राइट, तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को लेंगे, मैं लिमिटेड स्टेट आगे मैं थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म लेता हूं। राइट, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मेजर फीचर्स क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब ही होता है लिमिटेड स्टेट। राइट, तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है भाई रूल ऑफ लॉ। राइट, ठीक है, लिमिटेड स्टेट, जबकि मैंने लिख दिया लिमिटेड स्टेट, ठीक है, उसके बाद होता है इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी। अच्छा, ये क्यों है? क्योंकि इंडिविजुअल लिबर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिबर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तभी तो इंडिविजुअल लिबर्टी एक्सरसाइज कर पाएगा जब जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी। राइट, हु इज प्रोटेक्टर ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी? जुडिशरी इन मॉडर्न स्टेट। नहीं, judiciary is a custodian and guardian of the individual liberty. Right? Now, the rule of law जब भी होगा तभी तो individual exercise कर पाएगा. Right? Consent is also important. Right? Now, there are two types of consent. Consent, one is explicit consent and another is implicit consent. Right? For example, election में जब हम वोट देने जाते हैं, it is an explicit consent that we give to our representative. You can govern, right? You can make a rule on behalf of us, right? So if you look at liberalism, it believes on constitutionalism, right? Now, if you look at government, it talks about representative democracy. राइट, मुझे कुछ भी पूछ लेना आज लिबरलिज्म के पर्सपेक्टिव में, ताकि आप समझो लिबरलिज्म का आइडिया। लिबरल के हिसाब से आप मुझे कुछ भी पूछ लेना कि सर इस पे लिबरल क्या कह सकता है। राइट, क्योंकि लिबरलिज्म हम पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे से समझना है। ये आइडियोलॉजी समझ लोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, ताकि आप कुछ भी लिखो तो अलग, तीनों आइडियोलॉजी अलग अलग लगा दो, अपने हिसाब से एक ही चीज तीन तरह की हो जाएगी, है ना? सर आप ही बता दीजिए, अब तक आपको कितने क्वेश्चन मिले हैं इस पे अच्छे अच्छे वाले?
किस पे? लिबरलिज्म पे बहुत मिलते हैं। तो सर उनको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अगर जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे, अगर आंसर दे आप, कुछ भी क्वेश्चन दे रहे आप, आंसर तीनों को अलग अलग पर्सपेक्टिव में लिख दीजिए। तीनों मतलब लिबरलिज्म, सोशलिज्म, फेमिनिज्म। फेमिनिज्म इज वन पर्सपेक्टिव, राइट? सो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जरूरी है। अच्छा, सो लिबरल के हिसाब से सरकार कैसी होनी चाहिए? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होनी चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए? यूनिवर्सल लीगल फ्रेंचाइज होना चाहिए। सर लेकिन हॉब्स साहब तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को खराब कहते हैं। कौन? लेवियाथन बुक में हॉब्स। हाँ। Hobbes was not father of liberalism. Who's the father of liberalism? John Locke. हॉब्स Right? Hobbes targeted absolute monarchy. So Hobbes targeted divine right theory, not absolute monarchy. He supported absolutist monarchy, absolute monarchy. He targeted divine right theory. तो सर मैकियावेली भी तो डिवाइन राइट थ्योरी को टारगेट किया था, फिर उसको क्यों नहीं रखते हैं हम लोग? नहीं रखते ना, हम मैकियावेली को रखते ना हॉब्स को रखते। लिबरलिज्म में हम, मैंने हॉब्स लिखा है क्या? नहीं मॉडर्न में क्यों नहीं रखते इन दोनों को फिर? इनको जब डिवाइन राइट थ्योरी को दोनों ने चैलेंज किया था। हाँ, मॉडर्न फिलोसफर तो बोलते ही है ना। किसको? मैकियावेली को। मैकियावेली मिडिल वाला है ना? है मिडिल, वो गेट पे खड़ा है मॉडर्निटी के, वो गेट पे खड़ा है। हॉब्स जो है सो हॉब्स प्योरली मॉडर्न फिलोसफर, ठीक है। अगर और मॉडर्न लेंगे तो जॉन लॉक भी मॉडर्न है, उसको कंटेम्पररी फिलोसफर और कहते सर हैं। जेम्स मिल का जो लिबरलिज्म वो भी जॉन लॉक के हिसाब से। नाउ लुक एट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, राइट? बाद में जाकर के इन्होंने ये बातें की है। उसके बाद दे टॉक अबाउट रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन मतलब हर ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, राइट? नाउ इफ यू टॉक अबाउट मार्केट इकोनॉमी कैसा होना चाहिए, दे टॉक अबाउट फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी, राइट? लिबरल्स टॉक्स अबाउट, कुछ लिखना नहीं है, कुछ भी मत लिखिएगा अभी, मिटा दीजिएगा, हम बताएंगे आपको, लिखवाएंगे एक एक चीज, राइट? तो आप देखेंगे कि ये जो फ्री मार्केट इकोनॉमी है, इसी को कैपिटलिज्म कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? कैपिटलिज्म बोलते हैं, ठीक है? लिबरलिज्म को हिंदी में क्या बोलेंगे? कि किसको? लिबरलिज्म को हिंदी में उदारवाद, ठीक है? तो दिस इज कैपिटलिज्म, द फ्री मार्केट इकोनॉमी दे बिलीव। नाउ एक चीज पे मैंने थोड़ा कम बात किया, वो है लिमिटेड एस्टेट। लिमिटेड एस्टेट का मतलब क्या है? ये आप देखेंगे कि लॉ क्या कहता है कि स्टेट के पास कम से कम काम होना चाहिए। कितना काम होना चाहिए? 3 काम। कौन कौन सा? सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और तीसरा, राइट, कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करना, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है समाज में, राइट? उसके बाद और लिबरल्स बोलते हैं कि भाई स्टेट इज अ नेसेसरी एविल। स्टेट इज अ नेसेसरी एविल का क्या मतलब है? स्टेट इज नेसेसरी बिकॉज state can fulfill certain functions, like it can provide you security, it can maintain law and order, it can enforce contract, but it is evil also. Why it is a evil? Because the tendency of the state is, or modern state is, to tame your limit, your liberty. मॉडर्न स्टेट की एक टेंडेंसी होती है कि वो लिबर्टी को टेम करता है, वो लिबर्टी को क्रश करता है। इसीलिए स्टेट क्या है? स्टेट इज ए नेसेसरी इवल। जरूरत भी है, लेकिन ये है खराब चीज, पर जरूरी है। स्टेट इज अ नेसेसरी इवल। बट आइडिया, किसी ने कहा कि भाई स्टेट इज शुड एक्ट लाइक अ नाइट वॉचमैन। स्टेट शुड लाइक अ नाइट वॉचमैन। नाइट वॉचमैन क्या करता है?
जब कुछ गड़बड़ होता है तो एक्टिव हो जाता है, अदरवाइज वो शांत रहता है। किसी ने कहा कि स्टेट शुड बी लाइक अंपायर और रेफरी ऑफ द गेम। रेफरी क्या करता है गेम में, फुटबॉल गेम में देखा है रेफरी को? वो कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करता खेलने में। दे अलाउ द मैक्सिमम फ्रीडम टू ईच प्लेयर, बट व्हेन देयर इज अ फाउल, then referee interferes. Making sense, right? So a state should allow every individual to exercise their free liberty, that's maximum liberty. But when someone try to break the law, then a state can intervene, right? Now in terms of economy में यहाँ पर एडम स्मिथ आते हैं और एडम स्मिथ कहते हैं कि स्टेट शुड बी द लेजिस्लेटिव स्टेट। There should be legislative state. What is legislative state? A legislative state is a state which interferes at minimum in the market. For Adam Smith, market is self-regulatory institution. एडम स्मिथ के लिए मार्केट क्या है? सेल्फ रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन है, वो खुद से रेगुलेट करता है, खुद ही इक्विलिब्रियम में जाता है थ्रू डिमांड सप्लाई प्राइस। डिमांड ज्यादा होगा, अगर सप्लाई कम होगी प्राइस ऊपर चला जाएगा। अगर सप्लाई ज्यादा होगी, डिमांड कम होगा, प्राइस अपने आप 2-2 रुपये में सामान बिकने लग जाएगा, अपने आप सब लेंगे लोग, नहीं जरूरत है तो भी उठा के लोग रख लेते हैं, राइट? सो मार्केट बेसिकली is a self-regulatory institutions. It is regulated by an invisible hand. It is regulated by an invisible hand. ये कौन कह रहा है? The father of modern economics. And therefore, a state has no business to do business. The state has no business to do business. यहां पर 2 बार बिजनेस वर्ड का यूज हुआ है, बट दोनों का मतलब अलग अलग है। स्टेट हैज नो बिजनेस का मतलब है स्टेट हैज नो वर्क टू डू बिजनेस। डू बिजनेस मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी। स्टेट को इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज होने की कोई जरूरत नहीं है, राइट? स्टेट को इकोनॉमिक एंगेजमेंट में शामिल होने का कोई जरूरत नहीं है। लेट इट टू द प्राइवेट। If each individual will prosper better, ultimately society will prosper. अच्छा, ये बातें कौन कह रहा है इकोनॉमिक स्फीयर, इकोनॉमिक डायमेंशंस में? ये कह रहे एडम स्मिथ बाबा, द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, राइट? He had given the idea of laissez-faire state. ठीक है? So look at the economists like David Ricardo, Adam Smith, who emphasized on minimum intervention of the state in the market. अच्छा, तो फिर मिनिमम इंटरवेंशन की क्या जरूरत है? इंटरवेंशन ही नहीं कर, बोला नहीं नहीं नहीं, मान लो कोई झगड़ा हो गया तो स्टेट तो ये झगड़ा कौन सुलझाएगा? ये स्टेट सुलझाएगा। अगर किसी ने किसी का वादा तोड़ दिया तो, मान लीजिए आपने लैपटॉप लिया और लैपटॉप के बदले आपको भूसा भर के दे दिया दुकानदार, तो ये झगड़ा कौन सुलझाएगा? ये स्टेट सुलझाएगा। अच्छा, मार्केट में आग लग गई तो ये आग कौन बुझाएगा? स्टेट बुझाएगा, राइट? अदरवाइज ये जो सिक्योरिटी है, लॉ एंड ऑर्डर है, ये सब स्टेट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट करने का ये सब काम स्टेट करेगा, उतना इंटरवेंशन जरूरत है स्टेट का। बट स्टेट हैज नो बिजनेस टू डू बिजनेस। Look at several perspective state is here in liberal perspective. समझ में आया? राइट? तो देखो, मैंने यहां क्या बताया, एक इंसान लिबरल के हिसाब से कैसा है? लिबरल के हिसाब से इंसान क्या है? एक रैशनल है, उसके पास रीजन भी है, वो कोऑपरेटिव है। जॉन लॉक का जो इंसान है, द मैन ऑफ जॉन लॉक, कैन थिंक अबाउट the human nature of in John Locke. I taught you already, right? John Locke argued man is cooperative.
right? Man cooperate with each other, right? Okay? They have vision. They can govern themselves. They are good. They are rational. They are the best judge of their own self, right? They can understand what is the best interest of their life, and therefore man does not require intervention. समझ में आ रहा है? Now it's time to write a bit. थोड़ा थोड़ा लिखने की जरूरत है, हाँ? कल जो लिखाया उसके आगे हम थोड़ा सर प्लीज गिव मी 2 मिनट समझिए, सवालों तो जरूर पूछिए, लेट अस थिंक। हाँ हाँ जरूर सोचिए। अब हम फिर से आएंगे वन बाय वन आएंगे, सबके पास आएंगे। अब तो मैं बस ऐसे ही आपको एक पिक्चर दिखा दिया कि देखो भाई लिबरलिज्म होता क्या है। इस पिक्चर को कॉपी पे उतारना है, थोड़ा सा पेन डाउन करना है। Socialism is counter of liberalism, ना सर? सोशलिज्म के बारे में क्यों सोच रहे हो? When I'm teaching liberalism, don't think liberalism. तो सर When I'll teach you socialism, then you link it. रिलेट करता अभी मत करो ना, जब मैं सोशलिज्म पढ़ा दूंगा तब आप लिबरलिज्म से उसको कंपेयर करिए, फ्यूडलिज्म से कंपेयर करिए। अभी कल मैंने फ्यूडलिज्म के बारे में बताया। मेकिंग सेंस ऋषि, कशिश, फरदीन? यस सर। तो अब लिखिए ना जरा। देखिए, अर्ली लिबरलिज्म evolved in the industrialized West. Early liberalism evolved in the industrialized West and among the urban middle class. Early liberalism evolved in the industrialized West and among urban middle class who challenged feudalism, divine right theory, who challenged feudalism, divine right theory, and landed aristocracy. ठीक है, थोड़ा पैराग्राफ चेंज करिए, लिखिए इन द वेस्ट liberalism reflects the aspiration of the urban middle class entrepreneurs. In the West, liberalism reflects the aspiration of urban middle class entrepreneurs. Liberalism reflects. Yeah, liberalism reflects the aspiration of inspiration. Yeah, aspiration. Aspire जो करना. Aspiration of urban middle class entrepreneurs who sought fundamental freedom, and revolutionary change.
and revolutionary change. They opposed absolute authority of monarch. They opposed absolute authority of monarch. They opposed absolute authority of monarch and used the logic of social contract and used the logic of social contract to argue that humans are equal and free. ठीक है, समझ में आ रहा है? कशिश, आर यू राइटिंग? आपने पढ़ा है, अगर आपको कुछ इंटरवेंशन करना हो तो यू मोस्ट वेलकम. या इफ यू वांट टू इंटरवेंशन थोड़ा सा, यू मोस्ट वेलकम. थोड़ा सा क्या, बड़ा सा भी इंटरवेंशन कर सकते हो, राइट? सर ये भी है, ये भी है, अगर मुझसे कुछ छूट जाए, राइट? जो सीखना है सीखना है, यू नो. टीचर, मैं आई एम ऑलवेज ओपन टू लर्न, राइट? तो अगर आपको लगे कि सर कुछ छूट रहा है तो आप यू कैन, आप दे सकते हो मुझे, नो इश्यू एट ऑल, राइट? नाउ चेंज द पैराग्राफ. लिखिए, लिबरलिज्म. आप डॉक्टरेट की वजह से हाँ, आप इसमें डॉक्टरेट की वजह ना सो व्हाट, इसका मतलब नहीं कि आई एम एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑन इट. नो, सी, देखिए क्या लिखा. लिखा है सर, दे अपोज एब्सोल्यूट. नो नो नो, लास्ट में लास्ट, द मैन आर इक्वल एंड फ्री. फ्री. उसके बाद पैराग्राफ चेंज करिए, लिखिए लिबरलिज्म as a political ideology. Liberalism as political ideology was influenced by several movements and revolution. Liberalism as a political ideology was influenced by several movements and revolution. For example, Renaissance, Reformation, Reformation, Renaissance, Reformation, and Enlightenment movement. As well as from Glorious Revolution of 1688, as well as Glorious Revolution of 1868, Glorious Revolution, simple glorious ऐसे लिखते हैं, yes, GLORIOUS, Glorious Revolution 1688, comma, French Revolution 1789, French Revolution 1789, and American Revolution 1776. 1776, which highlighted the, the importance of individual, which highlighted the importance of individual, which highlighted the importance of individual, comma, region,
rights and liberty, rights and liberty, rights and liberty, popular sovereignty, popular sovereignty, popular sovereignty, constitutionalism, 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 limited state, limited state, tolerance, tolerance, consent, consent, and free market economy, and free market economy, and free market economy. The key features of liberalism are as follows. The key features of liberalism are as follows. उसके बाद देखिएगा human nature. Key features of liberalism are as follows. थोड़ा थोड़ा समझ में आया लिबरलिज्म ऋषि फरदीन आपको समझ में आ रहा है मनीष यस सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा आपने बताया उतना बार समझ में आ गया यस तो समझना मेरा पर्पस ही समझाना है क्लास का पूरा पर्पस ही समझाना आप इसीलिए यहाँ आ रहे हैं नहीं तो किताब में लिखा हुआ है हर जगह मटेरियल उपलब्ध है ना राइट पर्पस ही समझाना है क्या लिखा द की फीचर्स ऑफ लिबरलिज्म आर एज फॉलोज पहला लिखिए ह्यूमन नेचर पहले ह्यूमन नेचर पहले इंसान के बारे में देखते मैं ऐसे बीच में इसलिए बोलता हूँ ना क्योंकि ये याद हो जाता है नहीं नहीं बिल्कुल जरूरी है कन्वर्सेशन डायलॉग डायलॉजिक जो मेथड है बहुत अच्छी बात है ह्यूमन नेचर पहला लिखिए कुछ भी पहला लिख सकते हैं बट ह्यूमन नेचर क्यों इंसान कैसा है सिस्टमैटिक वे में है सर ह्यूमन नेचर इंडिविजुअलिज्म after human nature it become individual then you want liberty and then liberty impact the society will create a limited state and then a constitution right that's it human nature के बारे में लिखिए तो देखिए for liberals man is rational man is rational man is rational who possesses a religion who possesses religion and able to understand what is right and what is wrong man is rational who possesses religion and able to understand what is right and what is wrong. Man is best judge of his own interest. Man is best judge of his own interest. Man is best judge of his own interest. Therefore, he does not require external authority like a state. He does not require an external authority like a state or society
or religion to determine his conduct, to determine his conduct, or limits his freedom, or limits his freedom. बस यहीं पर रोक दीजिए, अब जरा पढ़िए इसको, थोड़ा समझिए इसको, मजा लीजिए इसको पढ़ के समझ के। ये क्या कहता है कि भाई मैन क्या है, एक रैशनल इंसान है जिसके पास रीजन है, वो समझता है कि क्या सही है और क्या गलत है। जब ये सब समझता है, राइट, मैन इज अ बेस्ट जज ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट, कोई दूसरा उसका इंटरेस्ट नहीं समझ सकता। और इसीलिए, राइट, neither state nor society nor religion like church, right, should determine what should be the conduct of an individual. ये डिटरमाइन नहीं करेगा। ये कौन डिसाइड करेगा? मेरा कंडक्ट कौन डिसाइड करेगा? मैं करूंगा। कशिश का कंडक्ट कौन डिसाइड करेगी? कशिश करेगी। सोसाइटी नहीं बोलेगी उसे कि उसे क्या पढ़ना है, क्या खाना है, करना है, मतलब राइट, लाइफ में कौन सा प्रोफेशन ऑप्ट करना है। इट इज नॉट बट आइडिया। उसको शादी किससे करनी है और कहां करनी है, द सोसाइटी इज नॉट गोइंग टू डिटरमाइन द कंडक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल। देन हु? द इंडिविजुअल, he himself or she herself would decide the conduct. Why? Because an individual is rational, who possesses reason and best judge of their own interest. समझ में आया? समझ में आया कि भाई मैं तो मैं हूं, मुझे कोई दखल अंदाजी नहीं चाहिए। क्यों? मैं समझ, अपना भला बुरा समझ सकता हूं। तो मुझे मत बताओ कि तुम ऐसे कर लो, वैसे कर लो। नो, मैं डिसाइड करूंगा, उसमें आपको जो मदद करना हो आप कर देना। मेकिंग सेंस अबाउट इंडिविजुअल, अबाउट ह्यूमन, राइट? नाउ राइट इंडिविजुअलिज्म, राइट? दूसरा फीचर्स लिखिए, इंडिविजुअलिज्म लिखिए। लिबरलिज्म गिव्स importance to individual over group or society or state. Importance of Liberalism gives importance to individual. Liberalism gives importance to individual over society, over society or collective bodies or state or state. Liberals like J.S. Mill rejected paternal authority of the state. Liberals like John Locke and J.S. Mill, liberals like John Locke and J.S. Mill rejected paternal authority of the state. Liberals like John Locke and J.S. Mill rejected paternal authority of the state and focused on individualism. देखो, थोड़ा सा 3-4 लाइन में लिखो, कोई दिक्कत नहीं, उसको बाद में 1 लाइन में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? मतलब आप लोगों ही बोल रहा हूं मैं, मान लो कि मैं 3-4 लाइन इंडिविजुअलिज्म के बारे में लिखवा रहा हूं, इतने सारे फीचर हैं, आपके क्वेश्चंस आएंगे, 150 वर्ड में ही लिखना है, आप बिल्कुल शॉर्ट कर दो उसको, ठीक है? बट यही क्वेश्चन अगर आपके पास 250 वर्ड में आ गए तो क्या करोगे? तो मैं 250 वर्ड तक, मतलब उस हिसाब से लिखाता हूं, ठीक है? समरी कर लेना आपका काम है ना? समझ में आया इंडिविजुअलिज्म के बारे में? अच्छा, पैटर्नल अथॉरिटी का क्या मतलब है?
पैटर्नल ऑथोरिटी का मतलब जैसे पिता, पैतृक। हाँ, पैतृक, पिता नहीं है। जो स्टेट है ना वो मेरा बाप नहीं है। जो नीतीश कुमार ने वो नकाब खींच दिया, दैट वाज वेरी रॉन्ग। ही इज अ चीफ मिनिस्टर। किसका? अभी जो बिहार में हुआ ना, नीतीश कुमार ने, एक लेडी थी डॉक्टर, इसका सर मैं बकवास नहीं सुनता। आयुष डिपार्टमेंट में नीतीश कुमार ने क्या किया? एक्चुअली सर हम लोग केवल एडिटोरियल पढ़ते हैं, बस फ्रंट का थोड़ा सा पेज देखे जो इम्पोर्टेंट हुआ, जैसे शांति अभी आया हुआ है, शांति बिल आया हुआ है फॉर न्यूक्लियर, उस पे 2-3 एडिटोरियल आ चुका है। आई थिंक शांति बिल पे पक्का क्वेश्चन आने वाला है। शांति बिल अच्छा है। न्यूक्लियर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। आप न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल 2010 है, उसको भी याद रखिएगा। अब प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन आएगा सर कि which sector is given 100% for FDI, allowed 100%, तो उसमें आ जाएगा सर कि इंश्योरेंस। अभी हाल फिलहाल में इंश्योरेंस को 100% दिया, 100% दिया। अभी तो बिल ही तो पास हुआ है FDI इंश्योरेंस। तो नीतीश कुमार ने, जैसे कि आप डॉक्टर गई, वो मुस्लिम महिला की, उन्होंने यहाँ तक अपना पहना हुआ था, इधर वो क्या नाम है, ये ज्वाइनिंग लेटर। तो ज्वाइनिंग लेटर पकड़ा रही है, वो पकड़ रही है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, यहाँ से उसका ये लिया और उसको खींच दिया। ठीक किया, ठीक किया। See, the state cannot be the parent. Let me tell you, you should not involve religion in job because this job is a secular job. अरे बाबा, नकाब क्यों पहनते हैं? तो आप गाइडलाइन पहले निकालते ड्रेस कोड के लिए। See, the state has to behave in a particular way. आप नहीं, ये टिकट नहीं कर सकते, किसी का धोती खोल दो, आप किसी का कुछ खोल दो, एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग, राइट? उनको अब नीतीश कुमार को ये लग रहा हो कि मैं एज अ पेरेंट थोड़ा सा, एज अ स्टेट शुड नॉट बिहेव लाइक अ पेरेंट। स्टेट इज अ स्टेट। पूरा बवाल हो गया, बहुत बवाल हो रहा है, राइट? कि भाई स्टेट शुड नॉट बिहेव लाइक अ पेरेंट, ठीक है? स्टेट शुड रिस्पेक्ट द इंडिविजुअल चॉइस, है ना? इंडिविजुअल चॉइस ऑफ एन इंडिविजुअल, राइट? तो किसी को मान लो कि आप ड्रेस कोड दे दीजिए, भाई आप जब नौकरी लेने का ये आएंगे, पर्टिकुलर ड्रेस कोड में, डॉक्टर के ड्रेस में, व्हाट ही ड्रेस कोड में आपने कुछ ऐसा नहीं बोला, फिर जिसको जो चॉइस हुआ, फ्रीडम ऑफ चॉइस तो है ही इंडिविजुअल का, राइट? कोई साड़ी में आएगा, कोई शूट में आएगा, है ना? कोई जीन्स और ये पहन के आएगा, है ना? कोई जो उसका ट्रेडिशनल अटायर है वो पहन के आएंगे। तो आप क्या करिएगा? आप बोलिएगा कि ये खोल दो, वो खोल दो। It's very wrong. It's very wrong. Yeah, Pradeep, you have to say something. Otherwise, this could have been applied. आप ड्रेस कोड अप्लाई कर देते कि अगर आप नौकरी लेने आ रही है, नौकरी, तो ये ड्रेस कोड होना चाहिए। नहीं, लेकिन मुस्लिम का थोड़ा सा सेंटीमेंट भी उसी तरीके का देखो, ये है, इसलिए थोड़ा सा फिर जो है ना, इनको भी ये समझना चाहिए स्टेट कैन नॉट इंटरवीन इन समवन्स पर्सनल। या एग्जैक्टली, किसी के पर्सनल नहीं करना चाहिए, बट व्हाई शुड यू आर गोइंग इन फ्रंट ऑफ सीएम एंड यू आर वेयरिंग सच अ थिंग? नाउ दैट, मान लो कोई साड़ी पहन के आए, कोई जींस पहन के आए, आप क्या करेंगे? See, the individual is a best, that is liberalism. You are intervening, that means you are feudal minded. समझ में आ रहा है? मैं जाने नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि भाई देखो ऐसा क्या है। या गॉट आइडिया अबाउट बेसिकली क्या नाम है, इंडिविजुअलिज्म। अब लिखिए लिबर्टी के बारे में, थर्ड पॉइंट लिखिए लिबर्टी के बारे में। वैसे भी सब 80 साल 85 साल के बुआ है क्या? हाँ, I have a huge respect for Nitish Kumar. What he done in the last 15-20 years, he has done good job. Mentality he changed. कौन? People's mentality sir उसी तरीके का। Now write about liberty. लिखिए, liberty is the core idea of liberalism.
Liberty is the core value. Liberty is the core value. Kashish is asking, if it is a feudal minded, then why France is against it? See, Kashish, here again, France, discourages the religion at public sphere or religious attire or religious symbol. That is a French version of secularism, Kashish, right? It does not allow religious symbol. Exactly. Now you can say कि negative secularism है या positive secularism है. India does not follow it, right? नेपाल आप देखेंगे फ्रांस में गाउन जो है आपका लॉन्ग गाउन वो भी मना है. आप अगर क्रिसमस वाले नहीं पहनते हैं क्रॉस क्रिश्चियंस, वो भी आप पहन के नहीं जाते हो. कहाँ पे सर? फ्रांस में दिखना नहीं चाहिए सामने, राइट? आप चंद ऐसे तस्वीर भी नहीं लगा सकते. सो फ्रांस डिस्करेजेस द religious symbols, religious biasness, symbols, symbolic representation. It discourages. ठीक है. इंडिया डज नॉट. आपको चंदन लगा के आना है या बुर्का पहन के आपको कैसे भी आना है, नो इश्यू. ठीक है, ठीक है. एनीवे, क्या लिखा लिबर्टी में? लिबर्टी इज द कोर वैल्यू ऑफ लिबरलिज्म. देखिए, फॉर लिबरल्स, liberty is a public good and essential value. Liberty is a public good and essential value for the development of society. For the development of society. देखिए, both John Locke and J.S. Mill supported individual liberty. Both John Locke and J.S. Mill supported individual liberty but advised that liberty is not license. Liberty is not license. Both advised that liberty is not license. It must be exercised with reason. It must be exercised with reason. It must be exercised with reason. REASON. Without it must be exercised with reason and without harming the similar liberty to others. And without harming the similar liberty to others. समझ में आया कि भाई लिबर्टी तो है, बट लिबर्टी का मतलब लाइसेंस नहीं है. लिबर्टी का मतलब लिबर्टी है, पब्लिक वैल्यू है. इंडिया, जैसे मैंने आपको जेएसमिल पढ़ाते वक्त खूब लिबर्टी के बारे में बोला, लिबर्टी लिबर्टी लिबर्टी, एक पेज करीब 2 पेज लिखवाया, याद है? जॉन लॉक जब बताया तो मैं 1.5 पेज के आसपास लिबर्टी के बारे में बताया कि दोनों ने क्या लिबर्टी के बारे में बोला है. ठीक है, तो जब क्वेश्चन आ जाए
कि मान लो कि एग्जामिन द लिबरलिज्म हैज फोकस्ड ऑन लिबर्टी देन इक्वालिटी, तो फिर आप लिबर्टी के बारे में लिखो। इक्वालिटी के बारे में बोला नहीं, बोल दूंगा, इक्वालिटी याद आ गया तो मैं बता दूंगा, राइट। जहां वहां पर जॉन लॉक को और जेएस मिल को पकड़ लेना। जस्टिस भी तो है सर, जस्टिस भी बता दूंगा, ऑफ कोर्स बताऊंगा। जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, अब लिखिए फ्रैटर्निटी भी तो है। लिबर्टी लिखिए, लिबर्टी हो गया, फासिज्म वगैरह तो उसी में ना है। सोसाइटी, सोसाइटी लिखिए, सोसाइटी और लिबरल कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी। लिबरल कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी लिखिए। फॉर लिबरल्स society is congregation of individuals. For liberals society is a congregation, बताता हूं, congregation, CONG, cong, GREGATI, congregation मतलब इकट्ठा होना। 50 लोग मिल गए वही सोसाइटी बन गई। Society is a congregation of individuals. समझ में आया क्या है सोसाइटी? हाँ समझा बहुत अच्छे से कि 50 लोग इकट्ठा हुए समाज बन गया। एक्चुअली आपको एक एविडेंस मिलेगा, वन ऑफ द एरिया इन स्टेट ऑफ बिहार, वेयर द फ्यूडल्स ऑफ बिहार ट्राई टू gather on one place that is called Beta. अच्छा, और and they made a society at there. उनमें ये चीजें थी और मैं उसको समझ नहीं पाया। राइट नाउ मुझे ये चीज समझ में आया क्योंकि जितने भी फ्यूडल्स थे एट द टाइम व्हेन सनसेट लॉ इज अप्लाइड, वो सभी गैदर हो गए थे, ठीक है, और एक जगह पे, एंड दे क्रिएटेड अ डोमिनेंट सोसाइटी। So what? So इनके लिए सोसाइटी क्या है? It is a congregation of individuals. And that is, इसको मैं एग्जांपल देता हूँ। For example, Beta. लेकिन liberals give priority to individual over society. And even today, if you go at that place, you can see the situation what is you have written. Yes, yes. ये जो आपने लिखा है ये साफ साफ दिखेगा। Liberals gives priority. Liberals give priority to individual. Liberal gives society. Liberals gives priority to individuals over society. For them, society is a product of the social contract. For them, society is the product of the social contract among individuals. Society is a product of social contract among individuals. ठीक है, समझ में आया? सोसाइटी क्या है? एक लोगों के बीच में आपस में लोग आए और उन्होंने मिला और उन्होंने एक डिसीजन लिया कि भाई हमें एक समाज बनाना है, और उन्होंने समाज बना दिया। ठीक है, तो यही ये जो हमने समाज बना, यही सोशल कॉन्ट्रैक्ट है कि हमने आपस में समझौता किया और हमने समाज बना दिया। हम आकर के यहाँ बस गए, समाज बना दिया हमने, यही समाज। बट ये समाज पहले या इंडिविजुअल पहले? लिबरल्स कहते हैं कि इंडिविजुअल पहले। अब लिखिए लिबरल कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टेट। लिमिटेड स्टेट मत लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा लिबरल कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टेट। लिबरल कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टेट। लिमिटेड स्टेट उस समय वर्ड नहीं आया था। आ गया था,
इसका लॉक का कहना है लिबरल कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। अब यूज करेंगे हम लिमिटेलिस्ट बाद में। लिबरल कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट लिखिए, जॉन लॉक कॉमा फादर ऑफ लिबरलिज्म, जॉन लॉक comma father of liberalism, again comma advocated for limited state. John Locke, father of liberalism, advocated for limited state. For him, the state has three functions. A state has three functions, namely security functions, comma, law and order, and third, to enforce contract. ठीक है, now change the paragraph. देखिए, थॉमस पेन, THOMAS, Thomas Paine, PAIN, Thomas Paine said that the state is a necessary evil. PAIN, sir. Thomas Paine, PAIN. PAIN. Thomas Paine said that the state is a necessary evil. The state is a necessary evil. The state is a necessary. Yeah, evil. A state is a necessary evil. Yeah. EVIL. Okay, a state is a necessary. A state is a necessary. A state is necessary because it performs three core functions. Core functions. A state is necessary as it performs three core functions, namely, it provides security and safety to the people. It provides में 1 2 3 करके 1 2 3 करके लिख दीजिए. It provides three functions, core functions, namely, first, security. It provides security and safety to people. Second, it maintains law and order. And third, it enforces contract among individuals. It enforces contract among individuals. It is evil. It is evil because it is always a threat to individual liberty.
Right? Now change the paragraph. Like liberals argue that a state should act like a night watchman. A state should act like a night watchman. States should Act like a night watchman. A state should act like a night watchman whose services are called upon. A state should act like a night watchman whose services are called upon only when there is a threat to social order. only when Whose services are called upon only when there is a threat to social order. There is a threat to social order. For liberals, a state should behave like a referee of the game. For liberals, a state should behave like a referee or umpire of the game. State should behave like a referee or umpire of the game who intervenes who intervenes only who intervenes only when there is a fall fall in the game. Otherwise, all individuals are fully free. Otherwise, all individuals are fully free to exercise their liberty. ठीक है? अंपायर का जितना काम है, एम्पायर का काम कितना होता है? वो खड़ा रहता है, राइट? जब 4 हुआ तो 4 बोला, जब 6 हुआ तो 6 बोला, जब आउट हुआ तो आउट बोला, राइट? ठीक है? तो ये काम होता है स्टेट का भी। अदरवाइज ये नहीं बोलता कि ऐसे खोलो, वैसे खेलो, ऐसे छक्का मारो, वैसे छक्का मारो। अरे जैसे मारना वैसे मारो, आगे मारना, पीछे मारना, दाएं मारना, जहां से मारना मारो। स्टेट का भी यही काम होना चाहिए कि इससे स्टेट क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए, बिल्कुल कम होना चाहिए। देखिए, liberal economists like David Ricardo and Adam change paragraph, change the paragraph and write. देखिए, economists like David Ricardo and Adam Smith emphasized on minimum intervention of the state in the market. David Ricardo and David Ricardo and Adam Smith emphasized on minimum intervention of the state in the market. Minimum emphasized on minimum intervention of the state in the market. What is also known as laissez-faire state? What is also known as laissez-faire state? What is also known as laissez-faire state?
what is also known as the laissez-faire state. Adam Smith argued that Adam Smith argued that Adam Smith argues that state has no business to do business. Adam Smith argues that the state has no business to do business. Individuals should be free in their economic matter. Individuals should be free in their economic matter. Individuals should be free in their economic matter. Later, social Darwinists like Herbert Spencer, later social Darwinists social Darwinists like Herbert Spencer Herbert Spencer in his book The Man versus the State, State 1884, developed a vigorous defense in the favor of laissez-faire state. सर ये लोग बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर होते थे जिनका बुक निकलता था तो लोग पढ़ते थे। ऐसे मतलब हम लोग टाइप के आदमी नहीं थे, मतलब कि बुक निकाल दिए तो कोई भी पढ़ लिया। नहीं, they were the highly regarded philosopher, right? उनकी जो कहते थे चलती थी। कैसे ये मतलब वो यूनिवर्सिटी में कोई प्रोफेसर वगैरह होते थे? हाँ, of course, पीएचडी वगैरह की। हाँ, Herbert Spencer in his book The Man versus the State, क्योंकि सर मैंने भी बहुत सारा बुक लिख दिया है developed कहानी का, कुछ चलिए a vigorous defense in favor of laissez-faire state. Herbert Spencer in his book The Man versus the State developed a vigorous defense in favor of laissez-faire state. To look at the state, right? The concept of state, in perspective, in a liberal perspective. समझ में आया? अब यहाँ से एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बन जाता है, एग्जामिन द लिबरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेट, और वो हो सकता है 15 मार्क्स का हो जाए, वो कभी हो सकता है वो 20 मार्क्स का हो जाए। समझ में आया? ठीक है, तो और लिबरल की जो एक, ये तो पहला वेरिएंट पढ़ रहे हैं हम लोग। अब तो हम एक सप्ताह लिबरलिज्म ही पढ़ेंगे, ठीक है, यही पढ़ाऊंगा मैं एक सप्ताह, राइट? थोड़ा सा और डिटेल में। क्लासिकल लिबरलिज्म, नियो लिबरलिज्म, यस, और मॉडर्न लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म, अल्ट्रा लिबरलिज्म, ठीक है। सो लिबरलिज्म एंड लिबरलिज्म अब पूरी तरीके से लिबरल हो जाएंगे। ये हो गया स्टेट। अब लिखिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कंसेंट
क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, एग्जामिन द लिबरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेट, एग्जामिन द लिबरल व्यू ऑन स्टेट। सिंपल क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता बड़ा 5 लाइन का। पीएसआईआर में 1 ही लाइन का क्वेश्चन आएगा। क्या सर ये आ जाओ। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कंसेंट एंड टॉलरेशन लिख दिया। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कंसेंट एंड टॉलरेशन। constitutionalism, consent and toleration are important values of liberalism. Constitutionalism, consent and toleration are important value of liberalism. समझ में आया? राइट, आज यहीं तक। रेस्ट आई विल टॉक अबाउट इक्वालिटी, बहुत कुछ है अभी बाकी, दैट आई विल डिस्कस टुमारो। कल लिबरलिज्म, ये मॉडर्न क्लासिकल, और इसको क्लासिकल लिबरलिज्म बोलते हैं। टाइम हो गया, चलो। ओके, कशिश समझ में आया? फॉरदीन, ऋषि, सर कल क्लास है? हाँ कल क्लास है। वी हैव क्लास टुमारो। यस यस, वी हैव क्लास टुमारो। अब वही रूटीन में चलेगा ना सर? अब वही रूटीन जो चल रहा था, ठीक है। वी हैव क्लास टुमारो, ठीक है कशिश? चलो, सी यू देन टुमारो। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। समझ में आ रहा है ना? बस समझना है।